Germany survives by the skin of their teeth. Germany survives and is still alive in the tournament. 83rd मिनट 83rd मिनट में निकलस फूलक्रोग ने आके इक्वलाइजर मारा and Germany's hopes are still alive in the tournament. Otherwise, it would have been very tough for them to qualify if they would have lost. They still would have had a chance, but had they lost today, I think it was going to be very tough for them. And they knew that. So they were desperate. Very entertaining match. आपने मैच देखा होगा तो आप बोर नहीं होगे पूरे मैच में बिकॉज इट वॉज स्टिल लाइक दो बहुत ही हाई क्लास मैनेजर्स लुइस एनरिके हांसी फ्लिक जो कि जिनको एक्सपीरियंस है चैंपियंस लीग जीतने का दे वन एवरीथिंग इन द गेम बोथ ऑफ देम सो वेरी हाई क्लास मैनेजर्स सो यू एक्सपेक्टेड अ tactical battle of sorts and it was cagey because both teams showed a lot of respect to each other in a lot of ways. But the most interesting aspect of the match for me was how both teams struggled to score a goal. Both of them. Now Spain started the game in their usual manner, dominating the ball, moving the ball along very quickly from left to right, and they were dominating possession. Spain से possession लेना बहुत मुश्किल है. I don't think कोई भी टीम होगी है इस टूर्नामेंट में जो स्पेन से easily possession ले लेगी. Spain will dominate possession in all their matches because the way they play and the way they move the ball so swiftly and so smoothly all around the pitch, it's just ridiculous because तुम नहीं ले पाओगे उनसे बॉल इतने इजीली वो पोजीशन डोमिनेट करते हैं. इट्स नॉट इवन फनी. सो पोजीशन लेना उनसे डिफिकल्ट है और जर्मनी को पता था. जर्मनी ने ट्राई भी नहीं किया ज़्यादा पोजीशन लेना. वो काउंटर प्रेस किया उन्होंने लेकिन अपने अपने हाफ में उनके हाफ में जाके प्रेस नहीं किया उन्होंने. आने दिया उनको बॉल लेके आने दिया अपनी तरफ एंड देन दे स्टार्टेड काउंटर प्रेसिंग. सो पोजीशन वाइज दे डिडंट डू मच रॉन्ग एंड दे क्रिएटेड गुड सिचुएशंस. अच्छी पोजीशंस में आ रहे थे वो अच्छी सिचुएशंस में आ रहे थे. गुड स्कोरिंग चांसेस भी क्रिएट करी उन्होंने. बट बाय सम गुड लास्ट डिच डिफेंडिंग एंड सम गुड सेव्स फ्रॉम मैनुअल नॉयर, especially the one from Dani Olmo, because I think that shot was going in. और एक भी मिली सेकेंड भी लेट होता अगर नॉयर उस सेव में तो that was a goal. So by all those things they still survived. Germany out of the blue scored a goal also from a set piece which was ruled offside by the VAR. So at half time both teams went 0-0 and Luis Enrique would have been the more disappointed manager because Spain were creating more and they were looking like the likely scorers in the first half especially. So second half में हमने देखा कि टोरेस को हटा के वो अल्वारो मोराटा को लेके आया and that changed the game a little bit because Dani Olmo, मार्कस असेंसियो और फेरान टेरेस के साथ होता है कि तुम इंटरचेंज करते हो. ये तीनों पोजीशंस इंटरचेंज करते हैं. इट्स अ वेरी फ्लूइड फ्रंट थ्री ऑफ दीज थ्री. When Morata comes in, he stays as a typical number 9. So वो बीच में रहेगा and he will dictate the movement across him. So that helped Spain to create some good situations for them and eventually they did end up scoring through Alvaro Morata only. But तुम अगर स्पेन का लाइनअप देखो, स्पेन का स्क्वाड देखो और स्पेशली उनका फ्रंट थ्री देखो आज का, डैनी एल्मो, फेरान टोरेस एंड मार्कस असेंसियो. So you don't see a lot of prolific goal scorers in that front three. ये ऐसे players नहीं है जो हर सीजन 15-20 गोल मारते हैं, right? और even their number 9, their typical number 9, Alvaro Morata, he is a good striker. But again, he's not a prolific goal scorer. ऐसा striker नहीं है वो जो 20+ गोल guaranteed है उसके हर सीजन में. So this is where I think Spain struggles the most. ठीक है? सब कुछ अच्छा है उनके बारे में. स्पेन के बारे में you cannot criticize them too much because the way they move the ball is amazing. The way they dominate possession, Busquets, Gavi, Pedri, midfield उनका मतलब is pure magic. But final third में उनका जो struggle है, it is quite evident. और ये अभी से नहीं है, ये कुछ last year की तुम बात करो यूरोज की भी तो you will see against big teams उनके result ऐसे थे 1-1, 2-1, a lot of 1-1s they had. And Spain is not a kind of team that will win a lot of matches 1-0 because they don't know how to manage a game defensively very well in my opinion. Because जहाँ गेम मैनेजमेंट की बात आती है वहाँ वो स्ट्रगल करते हैं. अगर जैसे भी आज भी देखा तुमने कि 1-0 when the game actually changed when they went 1-0 ahead. Germany was not looking likely to score until
that goal happened. And after that goal happened, Germany started to gain some momentum. They were getting in that final third and they were creating good situations. सो गेम मैनेजमेंट जो ट्राई करने की कोशिश करी एनरिके ने, ऐसा नहीं कि रुक गया गेम, मतलब स्कोर करने की भी कोशिश करी, बट द गेम मैनेजमेंट पार्ट दैट स्पेन ट्राइड टू अटेम्प्ट इज नॉट समथिंग, इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट सूट. तुम अगर यूरोज भी उठा लो लास्ट ईयर का, तो क्वार्टर फाइनल्स याद करो, स्विट्जरलैंड के साथ 1-1 ड्रॉ था, सेमीफाइनल इटली के साथ 1-1 ड्रॉ था. सो अगेन वही चीज़ है कि एक गोल विल नॉट बी इनफ फॉर स्पेन टू विन मैचेस. Now, they're not the kind of team that will win a lot of 1-0 matches. So they have to have that cushion of an extra goal. अब तुम बोलोगे क्या बकवास कर रहा है, 7 गोल मार के आ रहे हो कोस्टा रिका को. ग्रांटेड, डेफिनेटली 7 गोल मारे उन्होंने, बट 7 गोल में से अगर तुम देखो उनका लिस्ट ऑफ स्कोरर्स, तो 6 अलग अलग गोल स्कोरर्स थे. और ये 6 के 6 गोल स्कोरर अपने लीग में, अपने क्लब्स के लिए इतने सारे गोल नहीं करते अगर तुम सीजन पूरा देखो तो. सो after the retirement of David Villa, Fernando Torres, they've struggled to have that kind of striker, that kind of prolific striker who can always provide them with goals. ठीक है, बीच में डियोगो कोस्टा भी था उनके पास, लेकिन वो इतना टाइम तक खेला नहीं उनके लिए. सो एक वो टिपिकल काइंड ऑफ स्ट्राइकर जो 15 गोल 20 गोल जिसके गारंटीड है तुमको सीजन से, उस तरह का स्ट्राइकर वो अभी तक मिल नहीं पाया है स्पेन को. और उसके बाद से तुम देखोगे कि इंटरनेशनली दे हैव बीन स्ट्रगलिंग. So that is one thing, one only criticism you can have of a Luis Enrique team is that they don't have that kind of a player, and that is why they struggle. Even in Euros you saw that. ठीक है, स्पेन इटली से हार के बाहर हो गया था सेमीफाइनल में. और अगेन वही 1-1 स्विट्जरलैंड के खिलाफ, 1-1 इटली के खिलाफ, बोथ मैचेस में हमने देखा कि सेम स्टोरी है. बड़े मैचेस में दे स्ट्रगल, क्योंकि एक गोल उनके लिए इनफ नहीं है, और 1-0 वो नहीं जीतेंगे ज़्यादा मैचेस, because they give the initiative away after getting that one goal advantage. And जो गेम मैनेजमेंट ट्राई करते हैं, that is not their strongest suit. Similarly with Germany, अब जर्मनी के साथ थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो, क्योंकि हांसी फ्लिक अभी अपॉइंट हुआ जोकिम लो के जाने के बाद, 1 साल भी नहीं हुआ आई थिंक उसको प्रॉपर टीम के साथ टाइम स्पेंड किए. सो यू कैन स्टिल गिव हिम सम बेनिफिट ऑफ डाउट. और थोड़ा सा ही शॉर्ट इन ऑप्शंस ऑल्सो. टीमो वर्नर नहीं है, टोनी क्रूज नहीं है. So the kind of people that Germany have relied upon for the last 2-3 years, so those people are not there in the squad. But you can never discount Germany. You can never discredit them. They will come at you. They will try and they will keep on prodding like they did today. They kept prodding, and in the 83rd minute, Niklas Füllkrug gave them the equalizer, which gave a lot of relief to Hansi Flick. We saw that celebration himself. Hansi Flick with the goal scorer Füllkrug. So that gave them a lot of relief, because आज के गेम में मूलर गनाबरी struggled. ठीक है, मूलर तो दिखा भी नहीं आज पूरे गेम में. He was struggling big time. गनाबरी too not good enough today. और इन दोनों को हटाना पड़ा उसको बीच में. He had to sub them off because they were not providing him anything. Defensively they were still doing their job, but in that attacking threat they were not there. So Germany overall will have to play a pragmatic approach in this World Cup if they want to go deep into this World Cup, because they are not the kind of team right now that will dominate a lot of matches against big teams. So उनको एक pragmatic approach रखना पड़ेगा, काउंटर पे खेलना पड़ेगा. उस काउंटर पे उनके ऑप्शन अच्छे हैं. साने अगर फुली फिट हो जाता है तो साने, गनाबरी, मूलर, इनके साथ वो खेल सकते हैं काउंटर पे, अच्छा थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं. गोरेट्स्का है, they have got legs in their squad. So that is one approach that Hansi Flick can take in big matches. So आज भी देखा हमने कि वो पोजीशन पे इतना ध्यान नहीं दिया, काउंटर प्रेस करके ट्रांजिशंस पे काउंटर अटैक पे खेलने की ज़्यादा कोशिश किया, विच वॉज अ गुड टैक्टिक अगेंस्ट द स्पेन साइड, बिकॉज इनके साथ तुम पोजीशन नहीं ले पा रहे हो. आई डोंट केयर हु यू आर, तुम पोजीशन नहीं ले पा रहे स्पेन के साथ. दे आर मास्टर्स ऑफ दैट. दे आर जस्ट अनदर लेवल. लुइस एनरिके की टीम अलग लेवल पे उस मामले में. और ये नंबर 9 वाला जो पॉइंट मैंने बोला आज की स्पेन के साथ है कि डेविड विया, फर्नांडो टोरेस के बाद उनके पास नहीं है नंबर 9 इतने तरह का, कोई स्ट्राइकर नहीं है उस तरह का जो 20-25 गोल मारे. सेम विद जर्मनी, दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्राइकर. जो फुलक्रूग करके भी आज जो बंदा इक्वलाइज किया 1 year ago, ही इज अ वर्डर ब्रेमेन प्लेयर, एंड 1 year ago he was playing in Germany's second division.
So it's a beautiful story in a lot of ways because एक साल पहले वो जर्मनी की सेकंड डिवीजन में खेल रहा था और एक साल के अंदर ही ही स्कोरिंग द गोल विच इज गिविंग द एंटायर कंट्री अ ह्यूज सेंस ऑफ रिलीफ. सो he became an overnight hero of sorts today. So it's a beautiful story, a beautiful mini story in that game. बट अगेन वही प्रॉब्लम है कि जो जर्मनी के साथ भी तुम देखो तो मिरोस्लाव क्लोज था उनके पास एक टाइम पे. मूलर जब नाइन या फिर फॉल्स नाइन खेलता था, ही वॉज अ प्रोलिफिक गोल स्कोरर बैक देन, तब वो इतना स्ट्रगल नहीं करते थे. अभी राइट नाउ दे आर स्ट्रगलिंग लिटिल बिट इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग गोल्स. जापान के साथ भी देखा हमने कि फाइनल थर्ड में पहुंच रहे हैं वो, लेकिन दे आर नॉट एबल टू क्रिएट सिचुएशंस, क्लियर कट सिचुएशन, एंड दे नॉट क्लिनिकल इनफ, दे आर नॉट एबल टू किल द मैचेस. एंड सेम विद स्पेन. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग. अगर सब कुछ सही होता है तो बोथ दीज टीम्स शुड बी एबल टू एडवांस इन टू द नेक्स्ट राउंड. बट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम दैट दे आर फेसिंग, बोथ ऑफ देम, I think Hansi Flick and Luis Enrique both needs to resolve this somehow. And it will be interesting to see how they can do that because options नहीं है दोनों के पास उस तरह के. और कितने हम बोल रहे हैं कि मॉडर्न गेम में नंबर 9 धीरे धीरे खत्म हो रहा है, दैट क्लासिकल सेंस ऑफ स्ट्राइकर खत्म हो रहा है. इस टूर्नामेंट में तुमने देखा कि भाई हो सकता है कि मॉडर्न गेम में आगे जाके ये नंबर 9 स्ट्राइकर धीरे धीरे डिमिनिश हो जाए. बट इट्स नॉट जस्ट येट, नॉट टुडे. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन टुडे, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन एनी सून. और ये तो हो गया स्पेन जर्मनी की बात. अब आज का सबसे शॉकिंग रिजल्ट, विच इज़ नॉट सो शॉकिंग टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मोरक्को वर्सेस बेल्जियम 2-0 हार गई बेल्जियम आज. एंड बेल्जियम आज सो पुअर मैन. मतलब रॉबर्टो मार्टिनेज इज टीम, आई डोंट नो हाउ दिस गाय इज स्टिल इन द जॉब. मैंने साउथगेट के बारे में बात करी है दूसरे वीडियो में. सेम गोज फॉर रॉबर्टो मार्टिनेज. आई डोंट नो हाउ ही इज अगेन द काइंड ऑफ टैलेंट बेल्जियम हैज. The pool of players they have world class talent in the lineup, and they are not still able to gel together as a team, to perform as a team. You don't see a team when you see Belgium. टीम नहीं दिखती, इंडिविजुअल्स दिखते हैं बहुत सारे, बट टीम नहीं दिखती है. और रॉबर्टो मार्टिनेज को बहुत टाइम हो गया है वहाँ पे मैनेज करते हुए, उससे नहीं हो पा रहा है. सो आई डोंट नो व्हाई ही इज स्टिल इन द जॉब टू बी ऑनेस्ट विद यू. लास्ट यूरोज के बाद तो मुझे लगा कि ये चला जाना चाहिए, बट स्टिल समहाउ स्टिल ऑन द जॉब. एंड आई डोंट थिंक दे विल बी able to go a long way with this manager for sure, because they will struggle, and they are now facing a straight shootout between them and Croatia. And the Croatia, the way they played today, it's going to be a tough match, because Canada also, Canada is also an interesting match. Canada reminded me of Ten Hag's Ajax, which went until the semi-finals of the Champions League. Very young, vibrant side, so much energy, so much full of pace, so much full of surprises, and they were dominating in the initial 15-20 minutes. But Croatia, being experienced at such level and having that kind of manager to calm them down, and having the kind of presence of players like Modric, Perisic, Kovacic, these are like very experienced players who've been playing, who've done it all in the game. So it helped a lot, and eventually they won by 4-1, and which was a slightly more comfortable margin than what the game was actually. But hats off to Morocco, the day belongs to them. I think this is their biggest win in the World Cup, and they have a very good chance of getting qualified for the second round also. और 2 मैचेस हो चुके हैं अभी तक, just 1 match to go in the group stages, and still we only have one team who has qualified for sure, and that is France. अदर देन दैट किसी भी ग्रुप में कोई भी टीम नहीं है जो ऐसा लग रहा है कि क्वालिफाई ऑलरेडी सेकंड गेम में क्वालिफाई कर गई हो. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप सो फार. इट इज़ द वर्ल्ड कप ऑफ द अंडरडॉग्स फॉर श्योर. अभी तक इट हैज़ बीन दैट. जापान बीटिंग फ्रांस, साउदी बीटिंग अर्जेंटीना, टुडे मोरक्को बीटिंग बेल्जियम. सो द अंडरडॉग्स हैव रियली कम अप बिग टाइम इन दिस वर्ल्ड कप. अब ऐसा है, यहाँ से कुछ भी हो सकता है. मतलब कौन क्वालिफाई करेगा कौन नहीं, और कुछ बड़ी टीम्स पहले राउंड से डेफिनेटली जाने वाली है. दैट इज फॉर श्योर. द वे द अंडरडॉग्स हैव परफॉर्म्ड इन दिस टूर्नामेंट सो फार, यू कैन बी श्योर दैट सम बिग टीम्स विल डेफिनेटली गेट नॉक्ड आउट in the first round itself. So we'll see what happens next. Tomorrow there are also some good matches, Portugal versus Uruguay being the biggest of them. So I'll be making a video about that too. It's going to be a feisty encounter. Luis Suarez versus Cristiano Ronaldo. So let's see what happens there.
Until next time, Jai Shri Maka.